Mimics WE. Text mode open. Test. Yeah. Okay. Good morning, everyone. So it's 10 o'clock, and today, on behalf of the MANAGE-AC&ABC team, myself, Anupam Anand, consultant documentation, welcome all the participants, speakers to the 17th MANAGE-AC&ABC Agripreneurs Webinar series. The topic of today webinar is biotechnology in agriculture. Tomorrow's technology for today challenges. So we have always heard the term biotechnology being used as like modern science for developing various varieties as well as other technological need to upgrade the farming. And here we have guided here with our NTI and two of their best agripreneurs who have done a lot in the field of the have used a lot of the biotechnology resources in developing their agri ventures. So what are the uses of biotechnology in agriculture field? We can say that in briefly, application of biotechnology in agriculture involves scientific techniques such as genetically modified organisms, BT cotton, pest resistant plants. It helps in modifying plants, animals and microorganisms and improve their agriculture productivity. So this is like a very small brief introduction to the topic, and the rest in detail will be dealt by our NTI and their best two speakers. So today we have with us family farming
Just a second. Yeah. Today we have with us Family Farming Producer Company Limited, which is based out of Maharashtra and is one of the top performing NTIs of Maharashtra. We have with us Engineer Yogesh Patil sir, who is acting as the nodal officer of the NTI, and with we have also two of our speakers, which are Miss Aarti Denge and Sir Akshay Patil sir, who will be acting as the agripreneurs, the best selected agripreneurs for this particular webinar. So with this small introduction, I would like now to invite Engineer Yogesh Patil sir to give a brief introduction about their NTI and what different techniques or what different approaches they are using for the benefit of their candidates. Over to you, sir. I will request all the speakers, the participants to kindly mute themselves. Yeah. Yogesh Patil sir, can you hear us? My voice is audible, sir? Yes, sir. Yes, Yogesh Patil sir, your voice is first of all, good morning to everyone, and very much thanks to Dr. P. Chandrasekhara sir, Director Manage, General Manage, then Dr. Shahaji Fund sir, Principal Coordinator, Manage Hyderabad. Then also very thank to Dr. K. Sai Maheshwari Madam, Dr. Sagar Deshmukh, Training Associate Manager Hyderabad, and our guide, Mr. Mahesh Mane, Consultant Maharashtra, and also thanks to Anupam Anand, Consultant Manager Hyderabad, so for the giving the nice opportunity to our NTI. So today we are gathered on the online platform on the 17th webinar on the Manage Hyderabad on the topic of the biotechnology in the agriculture and tomorrow's technology for today's challenge. So basically, the biotechnology in agriculture is the tomorrow's technology for today's challenge. Biotech crops can make farming more profitable, and also by increasing crop quality and may in some cases increase the yields of the farmers. So it is also beneficial to our farmers yield, and also agriculture biotechnology means crop and livestock improvement through the biotechnology using the biotechnology tools. So in the agriculture sector, we can use this biotechnology in the various purposes. Like that, first one is the genetically modified crops we can use in the agriculture. Then also we develop the biofuels. Then also improving the plant growth regulators. Then improving the plant seed quality. Then improve the animal health and breeding system. Then learn more at the fruit grower supply. Okay, so these are the some applications of the biotechnology in the agriculture. So scope for the bio entrepreneurship also in agriculture biotechnology. So in our AC&ABC entrepreneurs having also large amount of the scope in the biotechnology sector. So as a bio entrepreneurship. So today myself, Yogesh Patil, as a nodal officer, working as a nodal officer for the Family Farming Nodal Training Institute, Kolhapur. So these are the some our digital media, email, website, Facebook, and Instagram. So you can follow you on these following details. So today we completed total 11 batches of the SABC training. So this SABC program we uh, SABC training program we sanctioned at the June 2019. So from that we completed total 11 batches. So out of that 169 students started their agri-ventures in a different fields like that goat farming, poultry farming, then mushroom cultivations. Okay, so various uh, activities they started at time. So today's also we have with two speakers from our nodal training institutes. First one is Aarti Dhenge. This is also working as an owner for the ZR Biotech. So they prepare the trichocards and bio control agents in their ventures. And also with us, second agripreneur from our NTI is Akshay Patil. So he's the owner of the Callus Biotech and also is working in the tissue culture techniques. Okay. So next one, today we go through it. So my presentation is a family farming producer company. We started with the this NABARD, then Small Farmer Agriculture Consortium, then World Bank, then Maharashtra Agriculture Competitiveness Project, then Government of Maharashtra. Okay, so we started with this FPO with along with this organization.
So about our FPO, Farmer Producer Organization. So under the ATMA, Agriculture Technology Management Agency, we started the forming the strengthening the farmers group from 25 May 2014. So FAO had declared the 2040 is a international year of the family farming. So we had to inspire and to participate them into this activity. So we formed the 20 farmers group. Each group has having a 20 marginal farmers. So on the date of the 8 December 2014, so we had complete the process of registration and name as the our family farming producer company. Uh, then about our FEO, having three objective, main objective. So first one objective is we provide the consultancy to the farmers in our Kolhapur district. So plantation and harvesting of the vegetable, horticulture and sugarcane crops. Then second one, our objective is we purchase the harvested banana, mango and papaya from the farmers and naturally ripe it and sold it into the domestic market. And third one objective, our farmer producer companies also collect the vegetables by primary cleaning, grading, and sorting operation. It's sent to the different small star like the Star, Reliance, and DMart. So this is our board of directors. So all these board of directors are highly qualified with completed their higher graduation in the different fields. So we joined our group and to form the farmer producer company in 2014. So current activities through our farmer producer company. First one is agro mall. So in that agro mall we provide the one roof solution to the all the farmers. So in this agro mall we provide the farmers various brands of the pesticide, insecticides and fertilizers. Then also we provide the facility to ripening chamber to the our farmers to naturally ripe the banana, mango, and papaya. So then third one, our activity is a sugarcane nursery. So we can also provide the good quality of the sugarcane nursery to the our nearby areas farmers for increasing the yield of the sugarcane nursery by using the high-tech sugar technology methods. So next one, the fourth one is our Nodal Training Institute. So in that Nodal Training Institute, we provide the different 5 courses to the agriculture sector students. Then next one, these are the some photographs of the current activities. So this one is the first one is a farmers common service center. So in that service center, we provide the different activities or different consultancy to the farmers. So next one is a visit of the some government officers to the our farmer producer company. Then next one is these are the some photographs, good photographs our farmers. So they are doing the banana farming. Then next one is a vegetable farmers from our cluster. This one is the photographs about the vegetable nursery of our farmers. Then tomato farmers from our farmer producer company. So for that, about also we done with the MOUs and agreements with the different brands. So first one is the Mahindra. We MOU with the Mahindra company for the Mahindra drip, Mahindra seeds, and Mahindra equipments. Then also Star Bazaar for the vegetables selling. Then for the Yara fertilizers, we MOU done with for the uh, objective of the wholesale of the dealer for the Kolhapur and Ratnagiri district. Then these are the some different brands. Amul Dairy. Then for the ADM is a soybean company, so soybean solvent extraction company. The next one is a Global India for the banana export. Then Green Deal is for VMO with for the vegetable market. Then Camson India for the sweet corn sale. Then for the KVK for the technical support. Then Syngenta, Bayer, ZDX, and Simabiotic. Then also we organize the different on the different subject 1 day workshop for our farmers. So first one is we organize the banana and mango cultivation practices 1 day seminar or workshop arrange. Then also we arrange on the topic of the vegetable and sugarcane cultivation practices. Then mushroom cultivation, cattle feed production, milk and milk products, value added products from the agriculture, then poultry farming and dairy farm management. Okay, so these are the some list we organize the 1 day workshop for the our farmers. Then these are the some good photographs about the workshop. For the mango cultivation, we organized the workshop in Devgarh, Konkan region. Then also sugarcane cultivation practices. Then on the also awards and applications appreciation, the award with the best farmer producer company in the Kolhapur districts on the
we by the Chandrakant Patil, Honorable Cabinet Minister, Government of Maharashtra. Then also appreciated by the Honorable Chandrakant Patil, Cabinet Minister, on the occasion of the Agriculture Day. So we also participate in the different agri exhibitions to promote our farmer producer company, then also promote our NTI, ACBC scheme, then DESI scheme to the farmers. So these are the some visitors. So visit of the Mr. Vilas Shinde, owner of the Sayadri Farms Nashik. So one of the largest producer company from the Maharashtra. So this owner also visited our farmer producer company. Then different FPOs from the Maharashtra and out of the Maharashtra also visited to our farmer producer company to guide. So about institutes, we provide the 5 different courses to the agriventure or agriculture graduates. So first one is you know about the agri clinics and agribusiness center. Then the second one, we provide the training course regarding the diploma in the agriculture extension service for the input dealers. They see. Then also certificate course on the insecticide management for insecticide dealers distribution. So this course is for the 12 days and approved by the NIPHM, National Institute of Plant Health Management. Then fourth one also is approved by the NIPHM, National Institute of Plant Health Management, the course on the integrated nutrient management for the fertilizer dealer and distributor. And last one course is approved by the Yashwantrao Chauhan Open University, Nashik. So this certificate course on the farmer producer organization and management. So this one course is for the duration of the 6 months. So these are the location of our NTI. So from the central bus stand, having only 3 kilometer from the Shivaji University, from the 1 kilometer. So in a location of our NTI, there is a huge potential for the agriculture graduates because this is the educational hub. So in that educational hub, we started the nodal training institutes. See, these are our building, and these are the training facility we provide to the training. All classrooms are in good condition with the ample sunlight and ventilations. Then these are the hostel accommodation facility. So next one is a clean and full furnished kitchen and space lunch for the dinner for the training. Okay, then last one, all the teaching facilities are available with us. So these are the staff of the NTI. Having we work on the different heads. Myself, Yogesh Patil, working as a nodal officer for our NTI, and so these are the different kinds of the work heads on the difference. The next one is a agriculture experts and resource person for the training. So we call the from our nearby areas total successful entrepreneurs, 24 successful entrepreneurs from the mushroom, for example, goat farming, then another jaggery production. Okay, so we call them for the to guide our ACBC training. Then also we call the technical experts, total 679 technical experts from our nearby areas. We call them for the to guide our training. Then also CS and CS also we call them for the we got to guide the ACBC training. So total exposure visit to the training into the different 32 agro industries during this 45 days program. And so points for the successful ACBC training and handholding activities. So we follow this strategy for the mobilization of the students for the ACBC program. Like that, we collect the data from the colleges, from different colleges, then also private classes, then unemployed youth from the rural area, use social media like WhatsApp, Facebook, Twitter, for the advertisement, and publish a newspaper in advertise in a newspaper, then prepare the holding and display it into the public places. So these are the number of colleges from our nearby NTI. In a 50-kilometer radius, total 11 colleges and total 64 colleges, and out of that 64 colleges, total per year 3,550 students pass per year. Okay, so we collect the data from these about 64 colleges and call them and to guide the regarding and to also explain the ACBC scheme. Okay, so these are the some prepare the holding and display on the public places, our NTI, and the promotion of the ACBC scheme, and to also arrange the online webinar regarding the ACBC scheme and various banking and loan under the various government schemes.
And these are the some published information in the newspapers about the AC/ABC scheme. Okay, so without wastage of the too much time, I stop here. So Anand sir, Thank you, Yogesh sir. I think it was like very insightful that how you're approaching and mobilizing students as well to get the NTA. And also, I like the posters that you have created. And to all the speakers, to all the participants who are here, and even the nodal officers and training coordinators, I would like to say this that family farming documents are one of the best documents that we receive here in Manage for documentation for any processing of first installment, second installment. Like there are few of the NTIs who produce like very good documents for us to process all the documents. And family farming is that one of the best NTIs where we don't even have to check second time that whether the documents are in right order or not. So this is one of the thing that family farming is doing very good. They are documenting all this very good. The processing is very fast. I don't think even we have with us Mane sir and other consultants over here who can like vouch for this that the family farming documents are very good. And the way sir showed us the poster that they use in public places to advertise about the ACABC scheme, I would urge all the other NTAs to also look into it, prepare certain posters, and like if they have a very good rapport with certain banks, what they can do is they can prepare the same posters and then they can give it to those banks also to for the use. Now, thank you, Yogesh sir. I will like you to stay in the webinar till the end, and we will yes sir, take questions in the end for you. So yes sir. kindly stay in the webinar. And now we will move on to our second speaker. Our second speaker is Miss Aarti Rajaram Denge. She's from Uchgaon, Kolhapur. She has a qualification in BSc Agri, and she's the founder of ZR Biotech. The firm is mainly involved in mass production of biocontrol agents, trichocards, and other biofertilizers. Aarti ma'am, are you there? Yes, sir. Good Yeah, morning. good morning. Yeah, good morning, ma'am. Can you speak a bit louder? 1 second. Yeah. And Am ma'am, I if audible? not, yeah, you are audible. And ma'am, if it's not a problem, you can switch on your camera so that our participants can at least see the founder of ZR Biotech. One. Yeah. Yes, it is visible. Yeah, it will come, ma'am. If you have switched on the camera, it will come automatically because there are WebEx takes a little bit of time. Okay. But very well, welcome to the webinar, ma'am. We are glad to have you over here. Kindly share your success story with us so that the participants as well as the upcoming agripreneurs can be inspired by your journey. Over to you, ma'am. Just some minute, I will share my screen. Ma'am, can you please keep your mic close to your voice is coming very low. One. You can switch off your video. No need of the video. I think there's a bandwidth problem from your side. You can switch off the video, but kindly keep the mic close to your so that it will be Okay. easy. Yeah. Screen is visible. Yeah, ma'am. It is about to come. Just give it a second. 1 Yeah, second. it is visible, ma'am, now. Yeah. You can go ahead, ma'am. Good morning, one and all. Myself, Aarti Ragam Denge. I am the founder of ZR Biotech. Basically, I am working on the production of a biocontrol agent. So biocontrol agent helps to solve. There are various problems produced by the usage of chemical pesticides, such as resistance is developed by the pest to the chemicals. It implicates the human health. It causes the cancers and the health issues. Non-target pests are on the way of extinction. Due to the usage of chemical pesticides, the products decreases the export value of the farm produce. There are residual effects found due to the usage of chemical pesticides. There is a reduction in the beneficial microbial populations in the soil.
there is a harmful effect on the natural habitat. Overall, after the pandemic area, we all know that chemicals and other fertilizers impact the human health. So there is need to introduce something which helps to control chemical pests without usage of a chemical. So we have come over with the solution. We have started producing the biocontrol agents. There are a huge opportunity for that. After we have studied it, there are only 141 biocontrol laboratories in India. There is a relevance of a biocontrol agent in the plant protection today. It's still limited. So there is need to reduce the use of chemical pesticides because of a residual effect, and over that, biocontrol agent is a part of an integrated pest management, which is beneficial one. Now we come with the solutions, which is environment friendly. It reduces the efforts of the farmer. It reduces the usage of chemical pesticides. It does not have any side effect. It emphasizes and it is convenient to use. And the point to be highlighted, it is cheaper than the agrochemicals. So this is our product. All the basic information is provided on the back side of the product, and here we see it is card. The eggs of the trichogramma is tested on this card. Here is a trichocard applied in the field of a brinjal. Brinjal is one of the noxious. Brinjal has one of the noxious pests, fruit and shoot borer, and there is no chemical should giving that same percent result. So our product is working on that. Here is the life cycle of that trichogramma. The adult wasp is a beneficial one for the control of a pest. We are arranging a farmers training program, on-farm demonstration program, and method and result demonstration program for the farmers. As the concept is innovative and the new one, there is a need to make the awareness among the farmers. So we are organizing it. Basically, the product is known for the unique selling position. That's what our all the useful instruction is provided on the back side of the product. As the concept is new, as the product is innovative and new, it is that required for the farmer. Then it balances the ecosystem without any harmful effect. It considers the safety of the farmer. As we know, there are many cases that farmers are died and farmers has a health issues while using of a pesticides and the fertilizers. So it is not happening in that case. It is very convenient to use. It must save time, efforts, and money of the farmers, and no particular skills are required. Anyone can use it. So these are our unique selling positions. Point to be highlighted that it has a pest control accuracy of 85 to 89%. It does not produces any residue and any resistance in the farm. It increases the cost of farmer income of the farmer by 25 to 45% and decreases the cost of production by 50 to 80%, which is beneficial for the farmers. And there is a need nowadays to reduce the cost of production and getting the maximum income. So we are planning to produce EPN, biofertilizer, metarhizium, chrysoperla, ladybird beetle in our future ventures. Now we are working on the production of trichocards and selling. We are organizing various events for the awareness programs, and also we are arranging and participating in the exhibitions. Now we are working for the market development and research development. Also we are planning for the soil testing lab, plant clinic,
there is one training and research center for the use of biocontrol agents, and we are working on it. Thank you. Thank you, Aarti ma'am, for the presentation. Ma'am, I would kindly request you to stay in the webinar so that we can move on to our next speaker now, and then we can take all the questions in the end of the webinar. Okay, ma'am? Okay, sir. I will. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much. So our next third speaker for the day is Mr. Akshay Ganapati Patil. Sir is the director of Callus Biotech Private Limited and founder of Association of Plant Tissue Culture Industries of Maharashtra. He is based out of Rajendra Nagar in Kolhapur, Maharashtra, and has a qualification in MSc Biotechnology. The name of the venture, as I told, is Callus Biotech Private Limited, and the area of venture is it is working in plant tissue culture, producing more than 100 varieties of agriculture, horticulture, ornamental plants by tissue culture technique, and is currently distributing plants in whole India and exporting to almost 9 countries. Akshay sir, very welcome to the webinar. थैंक यू सर, थैंक यू. आवाज आ रही है मेरी? जी सर, जी सर आ रही. Yes sir, you are audible sir. Which अभी मैंने दूसरे पीसी से शेयर किया है, लेकिन वो कांट शेयर कंटेंट बोल रहा है. नहीं, हाँ सर, वो अभी आएगा नहीं. तो आप बताइए, यहाँ पे मैं एक शेयर ऑप्शन दे रहा हूँ अक्षय पाटिल के नाम से. देखिए आप सर, आपको शेयर ऑप्शन नीचे दिख आ रहा है स्क्रीन. जी, अब आप शेयर कर सकते हैं सर. एक मिनट. दिखाई दे रहा है सभी? हेलो, नमस्ते. माई सेल्फ अक्षय पाटिल. मैं कोल्हापुर का रहने वाला हूँ और मैं अभी कैलस बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर हूँ, इसका को फाउंडर भी हूँ. और एम आई ऑडिबल ना? सर, यू कंप्लीटली ऑडिबल सर. बहुत अच्छे से आवाज आ रही सर. Okay, and I am also chairman of Association of Plant Tissue Culture Industries महाराष्ट्र. ये हमारे एसोसिएशन में तकरीबन 33 लोग हैं. इसमें से अजीत सीड से लेकर के बायो प्लांट से लेकर राइजन शाइन से लेकर बहुत बड़ी कंपनियां इसमें है. और ये एसोसिएशन फिलहाल हमने पिछले साल ही शुरू किया है. 33 साल कोई एसोसिएशन नहीं था हमारा, तो इसके हिसाब से मैंने सबको इकट्ठा करके ये एसोसिएशन की एस्टेब्लिशमेंट की है. तो पहले आगे जाने से पहले मैं थोड़ा प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी के बारे में बताना चाहूँगा. जिनका कोई साइंस बैकग्राउंड है या नहीं मुझे मालूम नहीं, या जिनके लिए प्लांट टिश्यू कल्चर टर्म नहीं है उनके लिए थोड़ा ब्रीफ मैं देना चाहूँगा इसके बारे में. एक्चुअली जब जो प्लांट होता है, इसमें प्लांट का नेक्स्ट जनरेशन जो बनता है, तो वो एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है तो इसमें फ्लावर आता है, इसमें से पोलन्स स्टिग्मा पर गिरते हैं और उसका फर्टिलाइजेशन होने के बाद ओवल्स का सीड में कन्वर्जन होता है और ओवरी का फ्रूट में कन्वर्जन होता है. ये रेगुलर मेथड ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन है जिसमें फ्लावर आता है. और दूसरा है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हम क्या करते हैं, प्लांट का कोई भी पार्ट से हम उस प्लांट की बहुत अच्छी संख्या बना सकते हैं. तो इसमें ट्यूबर है, कॉम्स है, राइजोम है. ये इस साइड में जो दिख रहा है ये ओनियन का है, आले का है, या पर्णफुटी करके वनस्पति रहती है उसका है. इसमें हम ये नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन है. और इस वेजिटेटिव प्रोपागेशन से हम नंबर ऑफ प्लांट्स बना सकते हैं. Before starting the actual tissue culture, we need to understand the basic structure and properties. ये टिश्यू कल्चर का कोर क्या है, मतलब ये टिश्यू कल्चर का स्टार्ट किधर से होता है. तो इसमें प्लांट में एक प्रॉपर्टी रहती है टोटिपोटेंसी करके. टोटिपोटेंसी मीनिंग जाने तो द एबिलिटी ऑफ सिंगल सेल प्लांट सेल टू ग्रो, डिवाइड एंड डिफरेंशिएट इनटू इंटर प्लांट. क्योंकि प्लांट के हर सेल में वो एबिलिटी है कि वो इसमें एक पूरा जीनोम सीक्वेंस प्लांट का हर सेल में रहता है, इसलिए वो हर सेल पूरे प्लांट में
कन्वर्ट हो सकती है या नंबर ऑफ प्लांट्स बना सकती है। और इसमें जो महत्वपूर्ण भाग है वो है अपाइकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लैटरल मेरिस्टेम। इन मेरिस्टेम में जो सेल्स रहते हैं, जैसे ह्यूमन में स्टेम सेल्स रहते हैं, ऐसे इस अपाइकल मेरिस्टेम में जो सेल्स रहते हैं उसमें ये प्रॉपर्टी रहती है कि नए प्लांट्स बना सके। तो इस प्रॉपर्टी का हम टिश्यू कल्चर के लिए इस्तेमाल करेंगे। और इसमें टिश्यू कल्चर का सबसे पहला स्टेज है ये मदर प्लांट सिलेक्शन। मदर प्लांट सिलेक्शन हम कैसे करते हैं? इफ यू कंसीडर फॉर द बनाना, we think we consider equal size of bunches. The plants must be free from virus and other pests, no any physical deformities in the bunches, and no any stress to the entire plot, and having good history. That means that the origin of plants and other things. सो इसमें से हम ये अच्छे बंच देख के ये जो सोड शक्कर है, ये सोड शक्कर निकाल लेते हैं और लैब में प्रोसेसिंग के लिए लाते हैं। तो उसके बाद हम एक इनिशिएशन प्रोसेस करते हैं। ये जब सॉइल से आता है तो इसमें इट इज फुल ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगस। सो वी आर डूइंग द प्रोसीजर कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन, प्राइमरी स्टेरिलाइजेशन, सेकेंडरी स्टेरिलाइजेशन, एंड देन वी पुट द exact meristematic tissue on the media. In this you can see this media. इस मीडिया में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ग्रोथ हार्मोन्स, ग्रोथ रेगुलेटर्स, प्लांट हार्मोन्स, ये सब रहते हैं जिससे प्लांट की ग्रोथ होती है। और पहले दिन, ये पहला पिक्चर है पहले दिन का, और इसके बाद ये 21वें दिन का पिक्चर है। 21वें दिन में वो मेरिस्टेम खुद बढ़ के एक नया प्लांट होने की तरफ जा रहा है। और 21 दिन के बाद इसको कट करके हम दो भाग बना देंगे, यानी हाफ मेरिस्टेम इधर और हाफ मेरिस्टेम उधर डालते हैं। और जैसे 21 दिन पूरे होते हैं तो इसकी एक नेचुरल प्रॉपर्टी है, दैट इज अपाइकल डोमिनेंस। जब हम किसी भी पौधे का टॉप कट करते हैं तो उसमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं और वो अपने ब्रांचेस बढ़ाता है। वैसे ही इधर जब हम इसका टॉप कट कर देते हैं तो ये नीचे से उसको शूटिंग आता है। ये आप देखिए, एक ही शक्कर से कितने अभी यहाँ 4 से 5 पौधे यहाँ बने हैं। तो ये है मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस। तो ये ऐसे 7 साइकिल हम लेते हैं। और उसके बारे में अगर आप टिश्यू कल्चर को एंटायर एक ही स्टेप में देखना चाहते हैं तो ये इनिशिएशन प्रोसेस, ये पहले दोनों इनिशिएशन प्रोसेस है, ये तीनों मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस और ये है रूटिंग प्रोसेस। ये इस स्टेज से लास्ट स्टेज तक आने के लिए तकरीबन 8 महीने का वक्त लगता है। और इसमें हम एक सक्सेस शक्कर से, मतलब जो शक्कर जो पहले लिया हुआ होता है और उससे जब हम प्लांट्स बनाते हैं तो तकरीबन 200 से 1000 तक ये प्लांट बन सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पेसिस। और शुगर केन के बारे में अगर ये हम करें तो 2 या 3 लाख भी एक ही मेरिस्टेम से हम प्लांट बना सकते हैं। टिश्यू कल्चर में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ये असेप्टिंग हैंडलिंग और टेक्निकल हैंड। ये सब वर्क चलता है लैमिनार एयर फ्लो में। प्लांट के पार्ट का कटिंग, अनवांटेड एरिया रिमूव करना और उसमें प्रॉपर कट्स लगा के मीडिया पर रख देना, ये सब काम लैमिनार एयर फ्लोज में हम करते हैं। और उसके बाद जब हम हमारे प्लांट्स लैब में आगे चलते हैं तो उसका हम एक वायरस इंडेक्सिंग और जेनेटिक फिडेलिटी टेस्टिंग करते हैं। वायरस इंडेक्सिंग मतलब लिया हुआ मदर प्लांट, उसमें कोई वायरस तो नहीं, CMV नहीं, बंची टॉप नहीं, या अदर कोई नॉन प्लांट वायरस तो नहीं। इसके लिए हम वायरस इंडेक्सिंग के लिए गवर्नमेंट लैब के लिए भेजते हैं और तैयार होने वाला पौधा उसका जेनेटिक फिडेलिटी करते हैं। तो उसमें हमें पता चलता है उसका कुछ जेनेटिक चेंज तो नहीं आ रहा है इसमें, और इसमें कोई प्रोसेस से कोई डिफॉर्मिटीज तो आई नहीं। इसके लिए हम जेनेटिक फिडेलिटी टेस्टिंग भी करते हैं। और ऐसे ये सब टेस्ट पास होने के बाद एक 2 टाइप हम प्लांट्स फार्मर को देते हैं। अभी लैब का प्रोसेस 8 महीने का पूरा होने के बाद हम प्लांट्स बाहर नर्सरी में हार्डनिंग के लिए निकलते हैं। ये लैब में तकरीबन 8 महीने रहता है। इसको आर्टिफिशियल सनलाइट और आर्टिफिशियल मीडिया पे, आर्टिफिशियल फूड पे रहता है। तो अगर ये प्लांट ऐसे ही ग्रीन हाउस में लाया तो इसमें स्कॉर्चिंग हो सकता है या मर सकता है। इसके लिए पूरी हार्डनिंग प्रोसेस फॉलो करते हैं। हार्डनिंग मतलब हम उसको धीरे धीरे एनवायरनमेंट को
निकाल लेते हैं। इसमें रहता है प्राइमरी हार्डनिंग और सेकेंडरी हार्डनिंग। प्राइमरी हार्डनिंग में हम पॉलीटनल्स का इस्तेमाल करते हैं जिसमें 90% ह्यूमिडिटी रहती है, और प्राइमरी हार्डनिंग 21 दिन का होने के बाद हम सेकेंडरी हार्डनिंग में रखते हैं जहाँ ह्यूमिडिटी नॉर्मल रहती है, और ये पौधा फील्ड में जाने के लिए तैयार होता है। इसलिए ऐसे इनिशिएशन से लेके सेकेंडरी हार्डनिंग तक तकरीबन 10 या 11 महीने का वक्त लगता है। तो ये अच्छा प्लांट हम फार्मर को डिलीवर कर सकते हैं। अभी मैं हमारी कंपनी के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। ये हमारी कंपनी का नाम है कैलस बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ रजिस्टर ऑफिस हमारा कांडगांव, तालुका करवीर, जिला कोल्हापुर, स्टेट महाराष्ट्र में है। और हमारे बारे में और जानकारी आपको चाहिए तो हमारी एक वेबसाइट भी है www.kalasbiotech.in। आपके कोई इंक्वायरी है तो हम और आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप इस पे भी kalasbiotech2008@gmail.com पर भी पूछ सकते हैं, और ये नीचे मेरा फोन नंबर है। ये कंपनी का प्रोफाइल अगर आप देखेंगे, ये 3000 स्क्वायर फीट लैब हमने, मेरा ग्रेजुएशन जूलॉजी में है और पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी बायोटेक्नोलॉजी शिवाजी यूनिवर्सिटी से। तो मैंने 2008 साल में हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ। उसके बाद हमने मार्केट स्टडी करके 2010 में इसका फाउंडेशन किया, और 2011 को हमारा प्रोडक्शन निकलना शुरू हुआ। ये तकरीबन 3000 स्क्वायर फीट की अच्छी लैब है, हाईटेक लैब है। और उसके बाद 10 साल बाद यानी इस साल हमने और एक लैब बनाई है, 3200 स्क्वायर फीट की हाईटेक प्लांट टिश्यू कल्चर लैब है। टोटल हमारे पास एम्प्लॉय है 140, एंड ये हमारे डायरेक्ट एम्प्लॉय है। और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हमारी कंपनी की वजह से जो जनरेट हुआ है वो तकरीबन 18 से 25 तक डीलर है हमारे पूरे महाराष्ट्र और इंडिया में, और 32 नर्सरी मैन हमसे कनेक्टेड है। हमारी टोटल कैपेसिटी अगर आप देखेंगे तो हम 25 लैक्स बनाना बनाते हैं। और पिछले साल से हमने क्या किया, बनाना में थोड़ा मार्केट का तेजी मंदी ज्यादा रहता है, इसलिए हमने अलग प्रोडक्ट रेंज शुरू किया है, वो है ऑर्नामेंटल प्लांट्स का। इसमें हम 35 लैक्स ऑर्नामेंटल प्लांट्स हमारे नए लैब में बनाते हैं। और कंपनी का टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर बाहर का, ये है लैब का इंफ्रास्ट्रक्चर, और बाहर का इंफ्रास्ट्रक्चर है 5 एकड़ ग्रीन हाउस है हमारे पास, और प्राइमरी हार्डनिंग तकरीबन 1 एकड़ है। ये कंपनी के फाउंडर्स के बारे में, को फाउंडर्स के बारे में बताना चाहूंगा। ये मेरे सुदर्शन शिवाजीराव चौहान मेरे क्लासमेट भी है, और हमारी कंपनी के को फाउंडर भी है मेरे साथ। और ये नीचे मेरा प्रोफाइल है। हम दोनों भी एमएससी बायोटेक है। एमएससी बायोटेक होने के बाद भी हमने डिसीजन लिया। हम एक अच्छे दोस्त भी है, और ये बिजनेस के हम दोनों डायरेक्टर भी है। ये हमारा अगर आप टर्नओवर देखिए, ये नए जो लोग हैं इनके लिए मैं बताना चाहूंगा, ये 2011-12 का टर्नओवर देखिए, ये तकरीबन 3.5 लाख रुपए था हमारा टर्नओवर। और जैसे जैसे हमने इस कंसिस्टेंसी को हमने बढ़ाया और हमारी इफिशिएंसी को यूटिलाइज किया, और तकरीबन 2012-22 में देखिए एक्सपेक्टेड 3 करोड़ था, लेकिन 3.5 करोड़ टर्नओवर इस पिछले फाइनेंशियल ईयर में हुआ, और अगले साल का प्रोजेक्शन 6 करोड़ का है। तो कोई भी चीज ये है एक दिन में नहीं बनती। अगर आप कंसिस्टेंसी से करो तो इसमें बहुत उतार चढ़ाव हमने देखे। तो आप भी तकरीबन, हमारे गुरुजी है वो कहते थे 1000 दिन लगते हैं कोई भी बिजनेस सेट होने के लिए। तो आप ऐसा पेशेंस रखिए और अच्छा बिजनेस चुनिए। प्लांट सोल्ड क्वांटिटी अगर आप देखेंगे तो तकरीबन हम 2011-12 में 1 लाख प्लांट भी नहीं बेचते थे, और इस साल 21-22 में देखेंगे तो हमने अभी 30 लाख पौधा मार्केट में बेचा है। और 22 और 23 फाइनेंशियल ईयर में हम 60 लाख पौधा हम तकरीबन मार्केट में बेचने वाले हैं। अभी 8 साल हमने डोमेस्टिक मार्केट में ही काम किया, 8 साल या 10 साल। और पिछले साल से हमने जब से ऑर्नामेंटल प्लांट का रेंज शुरू किया है, तभी हमको एक्सपोर्ट क्वालिटी की वजह से एक्सपोर्ट ऑर्डर आने लगे। इसमें हम पहले हम डोमेस्टिक महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना और यूपी के फार्मर्स को बनाना प्लांट्स बेचते थे। अभी ऑर्नामेंटल प्लांट का रेंज बढ़ा है, तो अब हम यूरोप, यूएसए, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, घाना, साउथ कोरिया, बेल्जियम को इस साल हम एक्सपोर्ट तकरीबन 1.5 करोड़ का एक्सपोर्ट कर चुके हैं, और आगे भी हमारे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स है। इसके साथ ही हम बाहर के लैब से कोई कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट्स, कोलैबोरेशन या कॉन्ट्रैक्ट प्रोपोगेशन का भी अभी
प्लान चल रहा है, और हम बाहर के जो हमसे भी छोटी लैब है उनको हम टेक्निकल नो हाउ और सपोर्ट देते हैं ताकि वो भी नया प्रोडक्ट रेंज ला सके। प्रोटोकॉल्स के बारे में अगर आप बात करेंगे तो 100+ कमर्शियल प्रोटोकॉल्स प्लांट टिश्यू कल्चर के हमने लैब टू लैंड डेवलप किए। दरअसल क्या रहता है, बहुत से प्रोटोकॉल R&D लेवल पर ही यूनिवर्सिटी में या रिसर्च इंस्टीट्यूट में अटके रहते हैं। लैब टू लैंड जाने वाले ऐसे ऐसे बहुत कम लोग आपको मिलेंगे। 100+ कमर्शियल प्रोटोकॉल डेवलप करने वाली महाराष्ट्र की हम पहली कंपनी है। और इसमें एग्रीकल्चर प्लांट में अगर आप देखेंगे तो हम बनाना ग्रैंड 9 बनाते हैं, बनाना जवारी देशी बनाना का बनाते हैं, शुगर केन का बनाते हैं। और ऑर्नामेंटल प्लांट में देखेंगे तो आप सिंगोनियम है, स्पैथिफाइलम है, फिलोडेंड्रॉन है, एलोकेशिया है, कैलाथिया है, कैलाडियम है, एग्लोनिमा है और होमेलोनिमा है। ये ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हम इंपोर्ट करते हैं और उसका टिश्यू कल्चर करके डोमेस्टिक या और एक्सपोर्ट मार्केट में बेचते हैं। हॉर्टिकल्चर क्रॉप में देखेंगे तो ये हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट का एरिया नहीं है, लेकिन इसमें भी हमने टिश्यू कल्चर प्रोटोकॉल डेवलप करके रखा है। इसमें रेड सैंडलवुड, व्हाइट सैंडलवुड, पोमोग्रेनेट और बाम्बू का भी टिश्यू कल्चर हमने किया है। और हमारा एक रिसर्च पेपर भी इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फिजिक्स यूएस के जर्नल में पब्लिश हो चुका है अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर से। कंपनी का अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 2000 एकड़ पर कंपनी हर साल प्लांट देती है। हमारा 3000 फार्मर्स का फैमिली है ये। नो एनी सिंगल कंप्लेंट ऑन कंपनी, कोई भी कंप्लेंट हम पर आज तक नहीं है। और टोटल फार्मर यील्ड जो हम जिस फार्मर को हम प्लांट बेचते हैं उनका अगर यील्ड अप्रोक्सीमेट कंसिडर करें तो वो 60,000 टन पर ईयर है। तो ये एग्रीकल्चर जीडीपी में तकरीबन 48 मिलियन का इंक्रीज करने में ये मदद कर रहा है। कंपनी का सर्टिफिकेशन देखें तो कंपनी ये सर्टिफाइड है एनसीएस टीसीपी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली का प्रोडक्शन का लाइसेंस है। कंपनी के पास कंपनी इज ऑथराइज्ड सीड प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी बाय स्टेट गवर्नमेंट महाराष्ट्र स्टेट। ये ISO 9001 सर्टिफाइड कंपनी है। हम एसोसिएशन ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर के मेंबर है, मेंबर APEDA के रजिस्टर्ड एक्सपोर्टर है हम, और मेंबर ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन और मेंबर ऑफ कोल्हापुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी है। ये सर्टिफिकेशन भी हमें लगते हैं आगे बात करने के लिए, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स लाने के लिए या हमारा प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करने के लिए सर्टिफिकेशंस हमें मदद करते हैं। इसके टिश्यू कल्चर के बारे में एक जनरल गवर्नमेंट का व्यू मैं बताना चाहूँगा थोड़ा सा। इसमें देखेंगे तो महाराष्ट्र में बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी है। इसमें लिखा है क्लियर कट कि टिश्यू कल्चर शुड बी ट्रीटेड एज ए कृषि उद्योग एंड ग्रांट ऑल फैसिलिटीज ऑफ कृषि। पावर मिनिस्ट्री हैज गिवन सप्लाई एट एग्रीकल्चर रेट्स, मतलब एग्रीकल्चर पंपिंग लोड का जो रेट रहेगा वो हमें ये पावर मिनिस्ट्री चार्ज करेंगी। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने सर्कुलर इशू कर दिया है कि एनए लैंड की इसको कोई जरूरत नहीं है। NHM नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, नेशनल बाम्बू मिशन, ये सभी ये प्रमोशन के लिए 50% तक सब्सिडी अभी इसमें ऑफर कर रहे हैं लैब के लिए। स्टेट गवर्नमेंट ने ये टिश्यू कल्चर एक्टिविटी एग्रीकल्चर एक्टिविटी है ऐसा डिक्लेयर कर दिया है। ये इनकम टैक्स के सेक्शन 8 में इनकम टैक्स नील कैटेगरी है, मतलब इसमें अगर आप टर्नओवर 10 करोड़ भी करेंगे या 100 करोड़ भी करेंगे इसके लिए कोई इनकम टैक्स चार्ज नहीं होगा। बैंक्स के हिसाब से देखेंगे तो बैंक का एग्रीकल्चर फाइनेंस क्वांटम जो है उसमें से ये फाइनेंस होता है, इसलिए बैंक को भी आसान जाता है कि 100 फार्मर को फाइनेंस करने से अच्छा एक कंपनी को एस्टेब्लिश कंपनी को फाइनेंस करे। ये जीएसटी एग्जम्प्टेड कैटेगरी है और ये इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में आता है। इस इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में आने से क्या होता है, हाँ, जब भी पिछली बार कोरोना काल चल रहा था, कोरोना वेव 1 वेव 2 में हमें डे फर्स्ट से ऑपरेशन की और फुल 100% स्टाफ प्रेजेंस और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट की लीगल परमिशन थी, इसलिए ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और कैलस बायोटेक के आप बारे में आपको और कुछ जानना है तो हमारा YouTube चैनल है, उस पर आप देख सकते हैं। टिश्यू कल्चर का प्रोसेस भी हमने उधर डिटेल में डाला है, यहाँ भी मैं प्रेजेंट नहीं कर सकता, उसमें टाइम बहुत कम है। हमारा फेसबुक पेज है, उसमें फार्मर का सक्सेस स्टोरी हमेशा अपलोड रहता है, और हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है, इसमें प्रोडक्ट रेंज हम सदैव अपडेट करते रहते हैं।
एसी एबीसी का ट्रेनिंग मैंने पिछली बार किया था। एसी एबीसी का ट्रेनिंग है, ऐसा ट्रेनिंग मुझे जो महसूस हुआ, ये यूनिक प्रोग्राम है मैनेज के द्वारा डेवलप। ये गवर्नमेंट का अच्छा अप्रोच है टुवर्ड्स प्रैक्टिकल अवेयरनेस जनरेट करने के लिए। ये एक बहुत अच्छा आइडियल प्लेटफॉर्म है फॉर शेयरिंग आइडियाज एंड गाइडेंस फ्रॉम बिजनेस एक्सपर्टीज। हम जब गए थे तब वहाँ अच्छे बिजनेस एक्सपर्टीज आए थे फ्रॉम डिफरेंट फील्ड, तो उनके साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, उन्होंने हमें उसके आंसर्स बताए। हमारे कुछ एक्सपीरियंस थे, वो हमने उनके साथ शेयर किया। एसीबीसी ट्रेनिंग करके 36 to 44% सब्सिडी का भी मॉडल है, वो भी अच्छा है। और इसमें मैं एक बात बताना चाहूँगा, अगर किसी को अच्छा प्रोजेक्ट करना है तो ये सिर्फ सब्सिडी देख के वो ट्रेनिंग ना करे, एक अच्छा नॉलेज पाने के लिए ट्रेनिंग करे। ये नाबार्ड के बैंक के कुछ आदमी आए थे, बैंक ऑफ इंडिया के वहाँ कुछ लोग आए थे, उनके साथ अच्छी बातचीत हुई। माइक्रो फाइनेंस या उसमें प्रोजेक्ट फाइनेंस, पैकिंग क्रेडिट, ऐसा इसके बारे में हमारी अच्छी बातचीत हुई। और एसीबीसी अच्छे बिजनेस टूर भी निकालता है नज़दीक के जो बिजनेस है, उसमें वो हमें विजिट के लिए अपॉर्चुनिटी देता है। एंड वेरियस आई ओपनर सेशंस फ्रॉम डिफरेंट एक्सपर्टाइज इन आवर डिस्ट्रिक्ट। सो हमारे डिस्ट्रिक्ट की जो एक्सपर्टीज है उनके साथ एक आई ओपनर सेशन भी रहते हैं, उसमें हम बहुत से आइडिया उनसे सीख सकते हैं। मेरे हिसाब से कुछ डूज और डोंट है कोई भी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट के लिए। प्रैक्टिकल स्टडी होना बहुत अच्छा है। डिग्री इज जस्ट पीस ऑफ पेपर। हम 10 साल इसमें 11 साल तकरीबन गए हैं इसमें। हमें लगता है डिग्री का इसमें जीरो रोल है। मैं एमएससी बायोटेक्नोलॉजी हूँ, ये बाहर भी मैं किसी को नहीं बताता। इसमें मार्केट स्टडी बहुत अच्छा रहना चाहिए। बिजनेस टूरिज्म हम क्या करते हैं, हम एंजॉय के लिए टूरिज्म बहुत करते हैं, लेकिन बिजनेस टूरिज्म का कंसेप्ट हमारे यहाँ बहुत कम है। एंड हम अच्छे एंटरप्रेन्योर के साथ डिस्कशन में बहुत कम पढ़ते हैं, इसलिए अच्छा डिस्कशन सेशन उनके अपॉइंटमेंट लेकर उन एंटरप्रेन्योर के साथ होना चाहिए, तो हम अच्छा एक एंटरप्रेन्योर बनने की रेस में आगे बढ़ सकते हैं। एंड जैसे मैंने बताया, डिग्री जस्ट पीस ऑफ पेपर। ये बिजनेस मुझे इसलिए नहीं आया कि मैं एमएससी बायोटेक्नोलॉजी हूँ, लेकिन इसलिए आया क्योंकि मैंने मैनेजमेंट का नॉलेज सीखा, मैंने फाइनेंस का नॉलेज सीखा, मैंने लॉ पढ़े। थैंक यू सो मच अक्षर सर, आपने काफ़ी ही डिटेल में प्रेजेंटेशन दिया। आई थिंक questions we can take questions now. So participants, you can unmute yourself and you can ask any questions to all our three speakers. Kindly go ahead. ये हमारी प्रोडक्ट रेंज है कुछ, जी। ये हमने डाली है ऐसे। ये अभी दिखाने के लिए बहुत प्रोडक्ट रेंज है, लेकिन जो अच्छी वाली है वो मैंने यहाँ डाली है। ओके, थैंक यू। सो पाटिल सर, मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे। हाँ सर, बोलिए ना। क्योंकि ये यूजुअली सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स और भी लोग काफ़ी जानना चाहते हैं कि हाँ। इनिशियल कितना अमाउंट चाहिए होता है एक बायोटेक मतलब लिटरली लैब सेटअप करने के लिए, और कितना मतलब कि किस साइज़ के हिसाब से अगर वो फाइनेंसेस चेंज होते हैं या फिर प्रोडक्ट्स के हिसाब से फाइनेंसेस चेंज होते हैं, क्या होता है एग्जैक्टली, लाइक व्हाट इज़ द इनिशियल अमाउंट रिक्वायर्ड टू सेटअप अ बायोटेक लैब? टिश्यू अभी कल्चर का लैब अगर सेटअप करना होगा तो इनिशियल अमाउंट कितना हमें चाहिए होगा? अभी सर कैसा है, अगर हम टिश्यू कल्चर लैब शुरू करेंगे, जब हमने शुरू किया था तो मैंने सिर्फ 40 लाख का लोन लिया था, और तकरीबन 40 लाख का मैंने ओन कंट्रीब्यूशन डाला था उसमें। लेकिन 80 लाख में मुझे 10 साल पहले खर्चा आया था। लेकिन अभी फिलहाल महंगाई को देख के 2 करोड़ के नीचे कोई लैब अभी फिलहाल बन नहीं सकती। और लैब के बजट का क्या है, लैब का बजट आप खुद का डालेंगे, बैंक से फाइनेंस लेंगे, ये इससे लैब तो खड़ा हो जाएगा, लेकिन लैब का जो वर्किंग कैपिटल है वो इतना बड़ा है, तो वर्किंग कैपिटल का भी अच्छे से प्रोविजन करना पड़ता है। और वो वर्किंग कैपिटल का जो साइकिल रहता है वो 8-10 महीने का साइकिल रहता है। तो अगर उसमें कुछ तेजी मंदी आए तो एडिशनल वर्किंग कैपिटल का भी प्रोविजन इसमें रखना पड़ता है, और बहुत से लैब इसमें फेल होते हैं। ओके, सुनील शिकप्पा, you want to ask any question? Kindly unmute yourself. We have अभिषेक पटेल। अभिषेक, आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? यस सर। हाँ प्लीज पूछिए। सर मुझे ये पूछना है, एसी एंड अभिषेक, आपकी आवाज़ धीरे आ रही है काफ़ी, थोड़ा ज़ोर से बोलिए। हेलो जी। हाँ बोलिए ना।
सर ये क्वेश्चन है मेरा, ये जो एसी एंड एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर की सर हमने ट्रेनिंग कंप्लीट की है, तो सर बैंक फाइनेंस नहीं करता है इसमें। वो गाइडलाइन के हिसाब से तो सर 15% में होना चाहिए और 10 लाख तक विदाउट कोलेटरल, लेकिन सर बैंक 25% के ऊपर 25% से ऊपर मार्जिन की मांग करता है और कोलेटरल की भी मांग करता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या 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 किया जाए? हेलो, हेलो, ये मुझसे है क्या सवाल? हेलो, एसी एंड एबीसी हो, कोई भी अभी बता क्या दे। है सर, कोई भी बैंक है ना, सेफ्टी पहले देखेगा। अगर ये बहुत सी स्कीम अच्छे रहते हैं, 40% सब्सिडी भी है, ये सब बैंक को मालूम है, लेकिन आप में क्या अच्छी वो कैपेबिलिटीज है, ये आप उनको प्रूव करना पड़ेगा। ये डिटेल और थोड़ा 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 क्या होगा, लेकिन खुद का आपको कैपिटल उसमें डालना पड़ेगा। ऐसे ही बहुत से स्कीम है, अभी सीजीटीएमएसी की स्कीम सिड भी रन कर रहा था, लेकिन इसमें एक भी लोन पास नहीं होता। तो थोड़ा खुद का भी बैलेंस शीट अच्छा बना के, थोड़ा 1-2 साल कुछ ट्रेडिंग वगैरह करके अगर आप इसमें उतरेंगे ना, तो बैंक को भी कुछ कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और आप पेपर पे दिखने चाहिए मेरे हिसाब से। आपका प्रोजेक्ट कितना है, आपका थिंकिंग क्या है, और आपका ये एम्बिशन क्या है, मुझे इससे इससे ज़्यादा आपका बैलेंस शीट क्या कहता है, ये मेरे हिसाब से बहुत क्या मतलब ज़रूरी है है। सर, जैसे अपन न्यू एंटरप्रेन्योर है, नए हाँ। एंटरप्रेन्योर हैं, अपने पहले का कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सिविल भी अभी तक कोई लोन नहीं लिया हुआ है, कोई भी लोन नहीं लिया, और अपन जैसे 25% बोलते हैं, अपन 25% देने को तैयार हो जाए, हमारे कोलेटरल भी देने को तैयार है, हुँ। तो बैलेंस शीट का क्या रहेगा सर? बैलेंस शीट तो अभी तक अपने कुछ है नहीं। नहीं, नहीं, मतलब बैलेंस शीट होना ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको प्रोजेक्शन तो अच्छे दिखाने चाहिए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मेरा इस साल 10 साल 20 लाख का टर्नओवर होगा, 40 लाख का टर्नओवर होगा, 1 करोड़ का टर्नओवर होगा। ये हमें प्रोजेक्शन बहुत अच्छे दिखाने चाहिए, और ऐसा कुछ नहीं है, आप प्राइवेट बैंक में जाएँगे तो वो ऐसी स्कीमें एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक वो फाइनेंस कदापि नहीं करेंगे। अगर आप बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऐसे बैंक में जाएँगे, तो मेरा खुद का जब स्टार्टअप था 2010 में, तभी मेरे को किसी भी प्राइवेट बैंक ने एंटरटेन नहीं किया था। मैं स्टेट बैंक के पास गया तो उन्होंने मुझे एंटरटेन किया, और वो उस समय 40 लाख का लोन दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा आप ट्राई करते रहिए, मेरे हिसाब से हो जाएगा इसमें से। और अभिषेक जी, मैं ये भी इसमें ऐड करना चाहूँगा, अक्षय सर जो कह रहे थे कि प्रोजेक्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका लोन कितना सैंक्शन हो सकता है। अब सर का टिश्यू कल्चर लैब है, तो उनको 40 लाख का लोन मिला। ये हमेशा नेसेसरी नहीं होगा कि आपको 40 या 50 लाख के लोन बनाने होंगे। जैसे हम अपने सारे एग्रीप्रेन्योर्स का हमेशा ये टाइम टू टाइम कहते हैं कि आप छोटे इंस्टॉलमेंट के लोन बनाइए। आप उसको लोन लीजिए छोटे, जैसे 5 लाख का, 7 लाख का आपको लोन बनाना है, क्योंकि 20 लाख तक की आपको सब्सिडी अवेलेबल है। 20 लाख से ऊपर आपको सब्सिडी मिलेगा नहीं। तो आप 5 लाख या 7 लाख का लोन लीजिए, उसको तुरंत टाइम पे रीपे कर दीजिए, ताकि आपका सिविल स्कोर अच्छा हो जाए, आपका बैंक के साथ रैपो अच्छा हो जाए, उनको पता लग जाए कि हाँ, इनका ग्रोथ प्रोजेक्शन भी अच्छा है, ये लोन भी टाइम पे रीपेमेंट कर देते हैं। तब आप फिर सेकंड लोन हाईएस्ट थोड़ा ज़्यादा अमाउंट डाल के एक्सपेंशन करिए। लेकिन आप लोन पे ही फोकस मत करिए सारा कुछ। ये हमारे सारे एग्रीप्रेन्योर्स हमेशा ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारा लोन सैंक्शन नहीं हो रहा है। तो लोन पे कम फोकस करके ग्रोथ पे ज़्यादा करिए। जैसे अक्षय सर ने कहा कि आपको प्रोजेक्शन दिखाना होगा कि 5 साल में आपकी ग्रोथ इतनी है, 10 साल में आपका सेल इतना होगा, तब जाके ही वो उस चीज़ को कंफर्म नहीं, करेंगे। प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट सर बहुत यूनिक है और बाइबल है। उसके लिए सर वो तो मैंने एक एग्जांपल दिया था कि नॉर्मली बैंक ऐसा करते हैं, जी। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा सर इसके लिए ठीक करता है। और मेन मेरा ये है कि प्रोजेक्ट बाइबल है, लेकिन 20 लाख में नहीं सर। ये जो ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म आपने सुना होगा, एनिमल हस्बेंड्री रिलेटेड, डेयरी के जो भी किसान होते हैं उनकी सर बेसिक फंडामेंटल नीड होती है कि उन्हें गुड ब्रीड एंड हाई यील्डिंग एनिमल्स हो। तो उसी का है सर हमारा कि हम ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म को, तो वो तो प्रोजेक्ट सर 4 CR का है, 4 करोड़ का है। लेकिन सर उसमें अलग से है, वो AHIDF से फंडिंग होती है। ओके। तो सर क्या ये दोनों क्लब हो सकता है कि AC एंड ABC एंड AHIDF की वहाँ यहाँ 35% सब्सिडी हम जनरल कैटेगरी से बिलोंग, तो वहाँ से क्लब ओके। हो जाएगा क्या सर? Shall I say something, Mr. या प्लीज ज्योति मैम, प्लीज।
या अभिषेक जी, मैं आपको बताऊंगी आपकी बैंक कौन सी है? बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा। आप क्या कीजिएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा में जाके जनमत आधार स्कीम पोर्टल अवेलेबल है, उसमें आप अपना डीपीआर अपलोड कीजिए अभी। बैंक से मैम? सिर्फ जनमत आधार स्कीम है एक, हमने अभी हाँ। जनमत आधार स्कीम एग्रीप्रेन्योर्स को 10 लाख तक लोन दे रही है विदाउट कोलैटरल सिक्योरिटी। तो आप अपना डीपीआर जो भी है, आप बैंक ऑफ बड़ौदा में जाइएगा, ब्रांच मैनेजर को बोलोगे मैं AC/ABC ट्रेन एग्रीप्रेन्योर हूँ और I'm eligible to get the facilities of benefits of from the जनमत आधार scheme. Please open the portal and I want to add my DPR in this portal. आप जो भी आपके जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपके डीपीआर की, वो आपको बैंक मैनेजर और एनीबडी हु इज इन स्टॉप इन द बैंक will help you how to upload the information in the जनमत आधार स्कीम। ओके, आपका प्रोजेक्ट क्या है सर? क्या मैम? प्रोजेक्ट है मैम ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। जी, ब्रीडिंग का है मैम, आपका डेयरी में टोटल प्रोजेक्ट एनिमल कॉस्ट कितना है? आपका टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना है? टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट मैम 4 करोड़ का है, लेकिन उसमें 2 CR का लोन है। नहीं, फिर 2 तो वो करोड़ का तो लोन है। AC/ABC में तो सैंक्शन ही नहीं होगा। आपको पता होना हम्म। चाहिए लिमिटेशंस क्या है स्कीम की। स्कीम की लिमिटेशन सिर्फ 25 लाख रुपीज, अगर आपको कोई इनोवेटिव आइडिया है तो। ओके अभिषेक, नहीं, आप मुझे फिर से कॉल कीजिए बाद में आफ्टर प्रेजेंटेशन, बिकॉज ऑल आर वेटिंग फॉर द मे बी द न्यू सेशन। You call me afterward. I will be tell you detail another projects or another scheme. Okay? अभिषेक जी, आप AC/ABC वेबसाइट पे जाके ज्योति मैम का नंबर वहां से आप लेके मैम को कॉल करके एंड डायरेक्टली शी विल टेल यू ऑल अबाउट दैट। ओके, Yeah. आप उनसे बात कर हाँ, सकते हैं। मिलेगा सर। जी? क्या अच्छा, नाम और रहेगा? मुझे एक अक्षय पाटिल से एक क्वेश्चन पूछना है हाँ, बोलिए। रिगार्डिंग बायोटेक्नोलॉजी। प्लीज अलाउ मी। या यस प्लीज, मैम, बोलिए ना। गो अहेड मैम। सर पाटिल सर, एक्चुअली मैंने देखा है कि आजकल वर्टिकल फार्मिंग का बहुत ट्रेंड आ रहा है और जिसमें ऐसे ही प्लांट और क्रॉप सिलेक्ट कर रहे हैं जिसका ग्रोथ पीरियड इज कम है। क्या ऐसा हो सकता है बायोटेक्नोलॉजी से कि जो क्रॉप ग्रोथ है वो रिड्यूस हो सकती है किसी क्रॉप की? वर्टिकल फार्मिंग के बारे में पहले मैं आपको बताना चाहूंगा। ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग, वर्टिकल फार्मिंग, ये जो या क्या बोलते हैं उसको, पानी पर खेती होती रहती है, हाइड्रोपोनिक्स, ये सभी जो ये सभी है ना, ये सभी एक टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है। इसमें इसके लिए एग्रीकल्चर के जो नियम है वो उसको लगेंगे ही। ऐसा नहीं होगा आप वर्टिकल फार्मिंग में अच्छा प्लांट बनाए और अच्छे दाम से मार्केट में बेच सके, ऐसा नहीं होगा। और टिश्यू बायोटेक्नोलॉजी से हम क्या कर सकते हैं, टिश्यू कल्चर से प्लांट का क्लोन बनाते हैं हम। इसमें नया कुछ कैरेक्टर हम ऐड नहीं कर सकते, या जो एग्जिस्टिंग कैरेक्टर है वो डिलीट नहीं कर सकते इसमें से, टिश्यू कल्चर में से। अगर क्रॉप का टाइप रिड्यूस करना है तो उसके लिए ब्रीडिंग प्रोग्राम में जाना पड़ेगा, और ब्रीडिंग प्रोग्राम हमारी कंपनी नहीं करती, हम सिर्फ टिश्यू कल्चर में एक्टिविटी करते हैं। थैंक यू सो मच सर पाटिल, थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. Any other participants wants to ask any question? Kindly go ahead and ask your questions to Patil sir, Aarti ma'am, as well as Yogesh sir is also over here. टिश्यू कल्चर और बायो फर्टिलाइजर्स के लिए हमारे एक्सपर्ट्स सभी यहाँ बैठे हुए हैं। आपको जो भी पूछना है आप काइंडली गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चंस। I think there are no more questions from our participants. Yeah, please. One more question, sir. One more question. हाँ बोलिए सर। जी अभिषेक जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम मतलब कि 12th विद एग्रीकल्चर से 12th किए थे और उसके बाद सर हम कुछ एक डिप्लोमा कर रहे हैं रेगुलर में जी, तो उसमें सब्सिडी के लिए एलिजिबल होंगे कि 1 ईयर गैप होना चाहिए? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। सब्सिडी के लिए आप एलिजिबिलिटी तब आता है जब आप AC/ABC की ट्रेनिंग करेंगे। हाँ सर, If you AC trained under AC/ABC training, then you are eligible for subsidy. That is it. इसके अलावा और कोई नहीं है इसका। ठीक है, जैसे हम कोई डिग्री कर रहे हैं उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता? नहीं नहीं नहीं, आपने ट्रेनिंग किया हुआ है, आप AC/BC प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हैं, यू आर एलिजिबल फॉर द सब्सिडी। ओके, सब्सिडी कितने टाइम में रिलीज हो जाती है सर यदि अपन ये कर रहे देखिए हो? अगर आपके कोई बैंक लोन अगर एक्सेप्ट हो जाता है AC/BC के अंदर एंड बैंक अगर सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके नाबार्ड को भेज देती है, यूजुअली सब्सिडी 15 दिन में इशू हो जाती है, पर वो सब्सिडी 3 ईयर्स के लिए लॉक इन पीरियड में चला जाता है। आप उस 3 ईयर्स में उसको यूटिलाइज, जब तक वो 3 साल खत्म नहीं होगा वो सब्सिडी रिलीज नहीं की जाएगी। रिलीज मतलब कि वो रिलीज हो जाती है, पर वो बैक एंड सब्सिडी है। कंपनी बैक एंडेड सब्सिडी है सर, वो पता है।
लेकिन सर प्रोजेक्ट जैसे शुरू हो जाता है 1 साल जी। के बाद सर हम कुछ और फंडिंग करते हैं किसी दूसरी स्कीम में, तो फिर क्या होगा उसमें? वो नहीं, वो सब्सिडी रहेगी आपके उस स्कीम में। तो कुछ दिक्कत तो नहीं होगी? आपको चली 3 तो नहीं साल जाएगी? के लिए आपका प्रोजेक्ट, देखिए आपको सब्सिडी रिलीज हो गया, वो 3 साल के लिए लॉक इन पीरियड में चला गया। अगर बीच में हाँ, आप और कोई स्कीम के अंदर अगर कुछ लेते हैं तो उस सब्सिडी को उससे कुछ नहीं होगा। ये कंफर्म। जैसे जैसे आपने एसीबीसी किया, अब मान लीजिए आप 1 साल के बाद या 1.5 साल के बाद एआईएफ स्कीम के अंदर कुछ और कर लेते हैं, एआईएफ स्कीम के फीचर्स यूज कर लेते हैं, तो वो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सर वन ईयर के अंदर ही करते हैं, जैसे सर अभी एआईएफ की कंडीशन है कि 2022-23 तक लास्ट जी, उसको लोन तो डिसबर्स करना है, आप और कर फिर उसके सकते हैं, बाद उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने अभी किया है और एआईएफ के अंदर आपको मिल रहा है, आप दोनों यूटिलाइज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बैंक यदि अलाउ करता है तो हो सकता Oh, है। sure. Thank you. Thank you. So with this, we conclude our 17th webinar in this Manage AC&ABC Agripreneurs webinar. We had like very insightful sessions from all our 3 speakers, where Yogesh Patil sir told what he's doing differently in running the NTIs and mobilizing the candidates and also helping them set up. Whereas we came to know with Aarti ma'am how biocontrol agents and biofertilizers can be developed. And in the last, Akshay Patil sir went into an in-depth discussion about a tissue culture lab. How can a tissue culture lab be set up? What is the amount required for tissue culture lab to set up and everything? So with this, on the behalf of Manage, I would like to thank all the 3 speakers to be present over here. Yogesh sir, Aarti ma'am and Akshay sir, thank you very much for giving your important time to us. Thank you, sir. Thank you, Thank sir. you so much. Thank you so much, Thank sir. you, sir. Thank you, And sir. yeah, Bottom. Thank you. yeah, I would also so like much, to, sir. yeah, I would also like to say that the next webinar will be done on 3rd of July 2022 with Akash Agri Solution Private Limited, Silod, and the top thematic area will deal with oil mill and nursery. So agripreneurs as well as NTI and all the participants, students, scholars, research scholars, scientists who are interested in knowing how to run an oil mill and nursery, kindly join us on 3rd of July 2022 with Akash Agri Solutions Private Limited, Silod, Maharashtra, to have an insightful session in the 18th webinar in the Manage AC&ABC Agripreneurs webinar series. I'd like to thank all my team, Manage AC&ABC team present over here. Thank you very much for being present over here. We'll meet again into the next webinar on 3rd of July 2022. Once again, thank to all the team and agripreneurs of Family Farming Producer Company Limited, Krushilam, Kolhapur, Maharashtra. Thank you all. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.